Good morning, students. This is your computer online class, and today we are learning about using the mouse. So, today we will start our new chapter, chapter number 5, using the mouse. So, you all know about mouse, students. You know what is mouse? Okay, look at this picture. This is the mouse. Look, it has a long tail. Okay, you can see here in this picture. And so likewise the same way computer is also having a mouse. Computer के पास भी उसका एक mouse होता है. Okay, the name mouse is derived from its shape which looks a bit like a mouse. ठीक है, माउस नाम इसका कैसे पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत माउस की तरह दिखता है. Its connecting wire appears like the tail of a mouse. ठीक है, so it has also a long tail and so it looks like mouse. Why we need a mouse, students? Do you know that? We need a mouse to give instructions to the computer. ठीक है, ये माउस हमें इसलिए इसकी ज़रूरत होती है ताकि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. ये एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, and so the mouse is a handheld device. It usually has two buttons, the left and the right button, and a scroll wheel, okay, in the middle, which can act as a third button. These buttons are clicked to perform different tasks. Okay, so in this picture you can see here the mouse has two buttons and the one scroll wheel. Okay, left button and right button, and in the middle part it is scroll wheel. Next we will see mouse pad. The mouse is placed on a plain surface known as the mouse pad so that it can move smoothly. ठीक है, माउस को हम किस में, एक पैड में रखते हैं, प्लेन सरफेस में, दैट इज़ कॉल्ड माउस पैड, ताकि माउस स्मूथली मूव कर सके, अच्छे से मूव कर सके. नेक्स्ट वी विल सी माउस पॉइंटर. When you move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer on the screen will move exactly the same way. जब भी आप माउस को मूव करोगे माउस पैड में, तो स्क्रीन में आपको ये एरो जैसे कुछ एरो जैसे दिख रहा है, ये दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटर. ये भी मूव होगा, जैसे जैसे माउस मूव होगा पॉइंटर भी मूव होगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग. इसको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग. सो द माउस इज़ ऑल्सो नोन एज a pointing device. It also helps you to select items. ठीक है, इससे कुछ भी हम सेलेक्ट करना चाहें तो इस एरो से, इस पॉइंटर से, माउस पॉइंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं. A mouse uses different pointers to do different jobs on the screen. Okay, माउस के different pointers होते हैं, different pointer shapes होते हैं, as you can see here in the screen. On the screen, normal select, this is simple arrow, then help select, this is arrow and question mark, then working in background, busy. Okay, next is precision select, that plus sign, text select, then handwriting, then unavailable. These all are the pointer shapes, or you can say pointers. Different types of pointers which is used on the screen. Now next we will see types of mouse. There are different types of mouse. Some of these are a mechanical mouse. First is a mechanical mouse. It has a rubber or metal ball on its underside which helps the mouse to move in all direction. So students, this first types of mouse is mechanical mouse, जो it has a rubber and or a metal ball underside. इसके नीचे साइड रबर या मेटल के बॉल होते हैं जिससे कि माउस मूव करते हैं ऑल द डायरेक्शन. द माउस कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट. ठीक है, और इस बॉल के बिना जो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके
बिना माउस वर्क नहीं करता है. ओके, now come to the next type of mouse, that is optical mouse. An optical mouse does not have a ball. It uses a laser for detecting the movement of the mouse. ठीक है, ऑप्टिकल माउस के अंडर साइड बॉल नहीं होते हैं और ये लेज़र से यूज़ किया जाता है. ओके, लेज़र यूजेस अ लेज़र फॉर डिटेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द माउस. लेज़र से मूव किया जाता है. Now next we will see cordless mouse. A cordless mouse has no cord to connect to the computer. It connects to your computer with a radio signal. Okay, cordless mouse में कोई वायर नहीं होते हैं, ये बिना वायर के ही कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से. ये कंप्यूटर से रेडियो सिग्नल के द्वारा कनेक्ट होते हैं. So students, we had learned today what is mouse, mouse pad, mouse pointer and types of mouse. So up to here today we will learn, and remaining of the chapter we will learn in the next period, next class. So till the next video, have a nice day student.